सॉरी यार, आई ऑलरेडी हैड अ फीलिंग कि आज ये मसले होंगे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज. एनीवेज, तो यार नेक्स्ट वाली वाज पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. सो इसकी वर्किंग देख लेते हैं. सो पहले वर्डिंग्स लिखते हूँ, फिर डायग्राम इसका भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. They are launched to observe polar regions. So polar orbiting satellites can be diagrammatically illustrated as shown. तो ये आपकी पोल्स के अराउंड ऑर्बिट करती हैं. So this is how the appearance of the orbit would look like. ठीक है, ये आपकी सेकंड कैटेगरी हो गई. ऑल राइट, थैंक यू रेहा. थर्ड वाला देख लेते हैं. The third category is referred to by the term global positioning satellites, GPS for short. These satellites are launched at an angle of 45 degrees as shown. So GPS satellites की भी diagrammatic representation देख लेना. So these satellites are launched at an angle. As you can see in this diagram, they are launched at an angle of 45 degrees, so kind of like this. इनका पर्पस भी देख लेना. They can simultaneously monitor both the equatorial region as well as the polar regions. ठीक है, तो अगर आप तीनों को देख लो, starting from the first one, फिर आगे proceed करता हूँ. So the first ones are equatorial orbiting satellites. They should be appearing in front of you right about now. They are launched around the equator and they are used to monitor equatorial regions. Then the second one, the polar orbiting satellites, they are launched to observe polar regions. So vertical plane के अंदर है. सही है, so ये आपकी horizontal plane में है. Polar orbiting satellites ये आपके vertical plane के अंदर हैं. And the third one, GPS satellites, inclined at an angle of 45 degrees. तो तीनों की diagrammatic representations मैंने बना दी हैं. तीनों का purpose भी साथ साथ list कर दिया है. Moving on further, then the fourth and rather the most important type of satellites, तो ये आपके syllabus के अंदर जरा ज्यादा important है. So these ones are referred to by the term geostationary satellite. मैं इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दूं और इनकी प्रॉपर्टीज लिख दूं, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहले वर्डिंग्स देख लीजिएगा. A geostationary satellite is one which appears to remain stationary
when viewed from the Earth's surface. Hence the term geostationary. So a geostationary satellite is one which appears to remain stationary when viewed from the Earth's surface. Further आगे wordings लिख लूं. For any satellite to be termed as geostationary, it must satisfy the following properties. तो properties देख लेते हैं, फिर इनकी discussion कर लेंगे. Okay, so the first property is since time period of Earth about its axis is 24 hours. Therefore, for any satellite to be classified as geostationary, comma, its time period must match with the time period of the Earth. Okay, so this is the first condition. Since time period of the Earth is about its axis is 24 hours, therefore for any satellite to be classified as geostationary, its time period must match with the time period of the Earth. Short form में लिख देता हूँ. So the time period of the satellite must match with the time period of the Earth. That is 24 hours. अच्छा, second property. Based on omega is equal to 2 pi upon t, if time period is identical, then the value of omega must also be the same. Hence, omega की value for the satellite के लिए s लिख देता हूँ, must be equal to the value of omega for the Earth. पहले statements लिखता जा रहा हूँ, फिर उसको symbolically लिखता जा रहा हूँ. ठीक है? So the first statement was for a satellite to be termed as geostationary, the time period of the satellite must match with the time period of the Earth. That was the first result. Then based on the formula omega is equal to 2 pi upon t, the value of omega must also be the same. So that was the second result. अच्छा, फिर third point. Since Earth spins on its axis about the equator, therefore a geostationary satellite must also be launched in an equatorial orbit
ठीक है, तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया, that since Earth spins on its axis about the equator, therefore a geostationary satellite must also be launched in an equatorial orbit. और फिर फाइनल वाला स्टेटमेंट, the Earth spins in the direction west to east about its axis. Therefore, a geostationary satellite must also follow the same sense of rotation. ठीक है, so if you go back to the 4 pointers that we have worked out, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूं ताकि वो चारों पॉइंट्स वन गो में आ जाएं, फिर कैलकुलेशन पे मूव कर जाऊं. So they should be appearing in front of you. ठीक है, so for any satellite to be termed as geostationary, it must satisfy the following properties. So first point, since time period of the Earth is about 24 hours, therefore for any satellite to be classified as geostationary, its time period must match with the time period of the Earth. So ये first point हो गया. The second point, based on omega is equal to 2 pi upon t, if time period is identical, then the value of omega must also be the same. Hence, second statement, omega की value for the satellite must match with that of the Earth. तो ये आपका second point हो गया. फिर further आगे, since Earth spins on its axis about the equator, therefore, a geostationary satellite must also be launched in an equatorial orbit. तो ये आपका third point हो गया. और final point, the Earth spins in the direction west to east about its axis. Therefore, a geostationary satellite must also follow the same sense of rotation. तो ये 4 points हैं, and all geostationary satellites must satisfy these 4 conditions. अच्छा, before I proceed, यार मुझे क्विक ओके का एक्नॉलेजमेंट कर देना कि अब मेरी ऑडियो में कोई लैग तो नहीं आ रहा, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊं. ऑल राइट, थैंक यू कुलसुम. ठीक है, थैंक यू उमर. सही है. सो मूविंग ऑन फर्दर, since time period for the Earth must be equal to the time period for the geostationary satellite. तो यार इसकी बेसिस पे what we can do is कि in the previous class we did the formula for the time period. This was the result. T is equal to 2 pi under root r cube upon gm, or for that matter, t square is equal to 4 pi square
times r cube divided by gm. So if we substitute time period as 24 hours, then we can get the value of r. तो अगर फॉर्मूले के अंदर मैं टाइम पीरियड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, आप चेक कर लीजिएगा. So 24 hours if converted will become 24 times 60 times 60. On the right hand side, 4 pi square capital G 6.67 times 10 to the power of minus 11 and capital M 6 times 10 to the power of 24. So with these numbers plugged in, we should be able to work out and get the value of R. तो R का रिजल्ट कितना बनता है, पहले वो देख लेते हैं और फिर इस रिजल्ट की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करके आगे प्रोसीड करते हैं. So if you simplify, you will get the value of R as 4.2 times 10 to the power of 7 meters. इस वैल्यू को लर्न करने की कोई रेलेवेंस नहीं है, सॉल्विंग बस याद रख लीजिएगा. So what this answer is telling us is that any satellite if launched around the equator at a distance of so and so can be classified to be geostationary. Adam is asking, is this value fixed? हाँ Adam. For Earth, since Earth का time period Adam fixed होता है, तो फॉर्मूले से देखो, since Earth का time period fixed है, तो surely Earth के लिए जो geostationary satellite का distance आएगा, वो भी definitely आपके पास एक constant value होगी. So for Earth, since the time period of Earth is fixed, therefore the corresponding value of R that you will get for the geostationary satellite will also be a constant value. सही है. So planet to planet vary करेगी, but as far as we are concerned with Earth, so Earth के लिए time period fixed है, consequently R की value भी fixed हो जाएगी. So you can kind of learn this value as well, that any satellite, if it is launched at this particular distance of 4.2 times 10 to the power of 7 meters, then that satellite with the context of Earth can be classified as geostationary. अच्छा, मैं ये वर्डिंग फिक्स की तो मिटा देता हूं जो आदम ने पूछा हुआ था, but I leave the formula. So diagrammatically speaking, what this tells us is कि अगर आप अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, ठीक है, सैटेलाइट को मैंने एस के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया है. So if you launch a satellite,
around the Earth in an equatorial orbit, kind of like this, precisely at a distance of 4.2 times 10 to the power of 7 meters, then this satellite can be classified to be a geostationary satellite. Now, for those of you जिनको नंबर ये वैल्यू याद रखनी हो तो might as well learn कर लीजिएगा. But if I were to ask you, how much is this distance when compared with the radius of the Earth? So, अगर आपको judge करना हो, how much is this distance in comparison to the radius of the Earth? So we know from the previous working that radius of the Earth amounts to this number. So if you are trying to figure out कि यार ये distance absolute terms में कितना होता है, just so that you know कि geostationary satellite कितनी दूर जाके launch करते हैं. So if I divide this answer by the radius of the Earth, okay, just so that we know कि ये number absolute terms में कितना है. So let's do that working to see. यार I think अगर आप workout करोगे ना, so I believe you will end up getting approximately this answer. So I think based on this answer, you can even say hence we can say that the distance of geostationary orbit is approximately 6.6 times the radius of the Earth. ठीक है, so अगर याद रह सके तो उस वैल्यू को याद रख लीजिएगा, 4.2 times 10 to the power of 7. Otherwise, if you want to make a comparison as to how much is this distance when compared to the radius of the Earth, so if you divide this distance by the radius of the Earth as we have done, तो आपका conclusion ये बनेगा कि we can say that the distance of geostationary orbit is approximately 6.6 times the radius of the Earth. Okay, before I continue, मेरा connection अब तक stable है ना? क्योंकि मेरे लैपटॉप पे बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि the connection is unstable. ठीक है यार. So I might get disappear in a moment or so. If that happens, तो reconnect कर देना. Let me see if I can do on my end to increase the strength. ठीक है, but nonetheless connection is unstable. मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, thank you Rania. All right, now one final thing before I proceed further, and that is what is the purpose of geostationary satellites. ठीक है, तो essentially इनको कहाँ पे यूज करते हैं उसकी एक वर्किंग. Since they appear to remain
stationary above any point on the Earth's surface. Therefore, they are generally used for long-term weather forecasting. पहला पर्पस है. Long-term communication link. सेकेंड पर्पस है. सो अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह देखना हो, ठीक है, क्रिकेट वगैरह, so you can make use of geostationary satellites. So they are used for long-term weather forecasting. Secondly, they are used for long-term communication links. और एक पॉइंट और पूछना है before I conclude. Help me answer this question. Can we use them for क्या लगता है? Can we use them for spying purposes? कोई सजेशन दो कि can a geostationary satellite be used? Okay, उमर ने लिखा है yes, राया ने लिखा है yes. ठीक है, जरा प्लीज रिकग्नाइज कीजिएगा मैं आंसर क्या लिख रहा हूं और रीजन क्या दे रहा हूं. Because if they remain stationary when viewed from Earth, they can be easily ठीक है. आदम ने नो लिखा हुआ था, बाकी लोगों ने यस लिखा हुआ था, और क्यों नहीं कर सकते उसकी रीजनिंग मैंने लिख दी है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू स्पाई ओवर अ सर्टेन कंट्री, तो इमेजिन अगर पाकिस्तान एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करता है राइट अबव न्यू दिल्ली, so the satellite is going to remain stationary right above New Delhi at all the times. So उनको तो फौरन से पता चल जाएगा कि एक सैटेलाइट हमारे सैटेलाइट इमेजेस कास्ट कर रही है. So since the satellite is not going to move, the fact that it remains stationary makes these satellites very easy to be tracked. Consequently, spying purposes के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं. So since the satellites appear to remain stationary above any given point on the Earth's surface, तो spying का purpose ये sort out नहीं कर सकेंगी, because if the satellite continues to remain stationary at one point, then it will be very easy for the other country to locate the position of this satellite. Hence, in short, these satellites can be easily tracked. Consequently, spying purposes के लिए यूज करना sensible नहीं होता है. ठीक है, अब यहां से मुझे आगे की वर्किंग करानी है. मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दे दो, मैं थोड़ा सा वर्डिंग सही कर दूं, और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वर्किंग करनी है उसके लिए आई मूव ऑन टू द अदर स्लाइड. ठीक है, सो ऑलराइट, मैं हेडिंग डाल दूं. फाइव मिनट्स के बाद कंटिन्यू करता हूं यार, और जो आगे की वर्किंग करानी है देन आई मूव ऑन टू दैट.
ठीक है यार, मैं आता हूं फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इज इट स्टिल रेनिंग बाय द वे? मैं भी जरा बाहर देखकर आता हूं क्या सिचुएशन है। ऑल राइट यार, तो लेट्स कंटिन्यू ऑन फर्दर। तो यार जो नेक्स्ट वाली वर्किंग अब करनी है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो बिफोर आई कंक्लूड विद टुडेस क्लास, मुझे इसमें 6 चीजें करानी है। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वर्किंग इन वन गो। फिर अगर कोई क्वेरीज होंगी ना तो मैं एक साथ एड्रेस कर दूंगा। सो आई विल नॉट बी लुकिंग एट द चैट मैसेजेस फॉर अ व्हाइल। लेट मी जस्ट कंक्लूड विद द वर्किंग ऑफ दिस ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन वन गो। वंस आई एम डन विद दैट, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप सजेस्ट कर दीजिएगा। तो क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, we'll start with कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है। सेकंड चीज, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के यूनिट्स।
तीसरी चीज, इसका फॉर्मूला मैं पहले हेडिंग्स डाल दूंगा, फिर एक साथ सारी हेडिंग्स को फिलअप कर दूंगा। अच्छा, फॉर्मूले के लिए आई नीड सम स्पेस। फोर्थ पॉइंट, हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला? थोड़ा स्क्रॉल अप कर रहा हूं, बाद में वापस चला जाऊंगा नीचे। इसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन do we get from the result? I'll scroll back up in a moment. Next is how do we define the term? Gravitational potential. Next is what is the significance of the minus sign in the formula? और एक आखिरी चीज, how do we construct graph of gravitational potential? ठीक है, तो आई वुड रादर वांट कि मैं ये सारी की सारी वर्किंग वन गो में पहले करा दूं, फिर मैं आपके कमेंट मैसेजेस वगैरह चैट बॉक्स के देख लूंगा। सो गोइंग बैक राइट एट द टॉप, आप मेरे साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा और हो सके तो जरा वर्डिंग्स को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता जा रहा हूं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल is denoted by the symbol phi. हो सके तो साइड बाय साइड लर्न भी कर लेना। सेकेंड चीज, इट इज मेजर्ड in units of joules per kilogram. तीसरी चीज, वर्डिंग्स मेरे साथ पहले फॉलो कर लेना। At a distance r, away from the source mass m, comma, the gravitational potential phi can be obtained using the formula phi is equal to minus gm upon r.
अब चौथी चीज, हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला? तो जरा कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए याद ही रख लो, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप ना करना पड़े। और हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, पहले ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं और फिर इसके बाद ये डिस्कस करना है व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द रिजल्ट। So let's apply this formula first, and then we'll see what information do we get from this result. तो फॉर्मूले के लिए let me construct a diagram. तो इमेजिन करें कि आपके पास अर्थ गिवन है, let's suppose there is a point given to you as A. The distance of this point from the center of the earth is given. Let me assume this distance to be equal to 7 times 10 to the power of 6 meters. And imagine if the question says, calculate gravitational potential phi at the point A. So if you apply the formula, ठीक है, I'm referring to the formula जो टॉप पे लिखा हुआ था, to calculate the gravitation potential at this point A. So based on the formula, let's see कि result क्या बनेगा. पहले मैं result निकाल लूं, then based on that answer, we will see what information do we get from this result. Let me work out the result first. So gravitation constant multiplied by mass of the earth, the source mass, divided by the distance, 7 times 10 to the power of 6. हाँ रानिया, मैं अभी आंसर लिख दूंगा स्टेटमेंट का. रानिया, मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा. तो यह जो आपका आंसर वर्कआउट करके बनेगा, in this scenario, if any one of you would like to just work it out to confirm my result, तो जरा वर्किंग करके मुझे एक्नॉलेज कर देना. So the answer that you will get will be this result. Now based on this answer, what information do we get from this result? So पहले ये स्टेटमेंट का आंसर देते हैं and then we'll proceed on. तो मेरी वर्डिंग्स को जरा फॉलो कर लीजिएगा कि what information do we get from this answer. स्टेटमेंट देख लीजिएगा. The gravitational potential at A tells us the amount of energy keep looking at the answer and try to match my wordings with the answer. The gravitational potential at A tells us the amount of energy lost by a mass of 1 kilogram
as it moves from infinity to the point A within the gravitational field. So पहले ये statement देख लीजिएगा कि what information do we get from this result? So the gravitational potential at A tells us the amount of energy lost by a mass of 1 kilogram as it moves from infinity to the point A within the gravitational field. Let me include one more statement over here. The term infinity in this case refers to an assumed distance where the gravitational field of Earth has negligible slash zero influence. Okay, so once again, the answer that we got in order to explain what information is delivered to us from this answer. So what this answer is telling us is the amount of energy lost by a mass of 1 kilogram as it moves from infinity to the point A within the gravitational field, where the term infinity in this case refers to an assumed distance where the gravitational field of Earth has negligible slash zero influence. ठीक है, so अब तक मैंने चार चीजें आपको एक्सप्लेन करी हैं. मैं भी आगे मूव करूंगा, बट पहले ये चार चीजें देख लीजिएगा. So the first thing which I stated was that gravitation potential is denoted by the symbol of phi. Second statement was it is measured in units of joules per kilogram. Third statement was at a distance r away from a source mass m, the gravitation potential phi can be obtained using the formula phi is equal to minus gm upon r. The fourth scenario mein, I told you how to apply the formula and how to work out the result. Iske baad next working was what information do we get from the result? So let me repeat this information once again. So the answer of the gravitation potential at any point gives us the following information. It tells us the amount of energy that will be lost by a mass of 1 kilogram as this mass moves from infinity to that point A within the gravitational field, where the term infinity in this case refers to an assumed distance where the gravitational field of Earth has negligible slash zero influence. So now on the basis of this statement, if in the exams you are asked कि आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल के टर्म को डिफाइन कैसे करोगे, तो जो वर्डिंग ऊपर लिखी हुई थी ना, उसी वर्डिंग की बेसिस के ऊपर मैं डेफिनेशन जनरेट कर रहा हूं, वो देख लीजिएगा. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल at any point is defined as the amount of work done
आपको एनर्जी लिखना है तो आप एनर्जी लिख लीजिएगा, अदरवाइज वर्क डन का टर्म सही लगे तो वर्क डन का टर्म लिख लीजिएगा, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit mass. ठीक है, यूनिट मास का मतलब मास ऑफ 1 किलोग्राम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, थोड़ी देर पहले हाँ आदम ने लिखा हुआ है कि ना 1 किलोग्राम मास बी रेफर्ड टू एज यूनिट मास, सो आई गेस आदम दैट्स टेकन केयर ऑफ, क्योंकि मैंने आंसर के अंदर यूनिट मास ही लिख दिया था। रानिया ने एक स्टेटमेंट पूछा हुआ था कि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं इसके साथ मेंशन कर दूं, नीचे लिख देता हूं, जगह है ना यहाँ पर। तो रानिया आई सेड कि मैं अभी इन अ वाइल मूव कर जाऊंगा, so derivation is not required. वैसे जनरल टर्म्स में जहां जहां डेरिवेशन रिक्वायर्ड होगी ना, मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताता जाऊंगा। तो हर फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिराइव्ड इन योर सिलेबस आई लेट यू नो। तो अगर मैं किसी जगह मिस आउट कर जाऊं ना कहना, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड देन द डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर एक्सप्लिसिटली आई लेट यू नो कि दैट फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू बी डिराइव्ड। इफ इन केस मैं किसी जगह कुछ भी नहीं बोलता हूं एंड इफ आई स्टे न्यूट्रल, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कि उसकी डेरिवेशन इज नॉट नीडेड। एनीवेज मैंने मेंशन कर दिया है। अब मूविंग ऑन फर्दर, जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इफ एनीबडी कैन हेल्प मी आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनस साइन इन द फॉर्मूला। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू कि यार माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है इन द फॉर्मूला, सो एनी सजेशंस के माइनस साइन फॉर्मूले के अंदर क्या इंडिकेट करता है? ओके, उमर ने लिखा है इंडिकेट्स लॉस, मोईद ने लिखा है एनर्जी लॉस्ट, वर्डिंग सही है, लेकिन यार थोड़ा ओके रायान ने भी सेम वर्डिंग लिखी है, लेकिन यार आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को प्रॉपर करना पड़ेगा। सही है, एडम ने भी एक वर्डिंग लिखी हुई है और नवाल ने एक वर्डिंग लिखी हुई है। मैं सारी वर्डिंग्स को कंबाइन करके आंसर लिख रहा हूं। हुसैन हैज आल्सो रिटन लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, नवाल का भी स्टेटमेंट एक और आ गया। ठीक है गाइस, होल्ड ऑन, जितने स्टेटमेंट्स आपके आए ना मैं उन सारों को कलेक्टिवली प्रॉपर वर्डिंग्स में फ्रेज आउट कर देता हूं, सबके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट दैट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ माय मी ऑन द स्क्रीन, आई थिंक वो सारे स्टेटमेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पर आ जाएंगे। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनस साइन इन द फॉर्मूला? ठीक है, वर्डिंग शुड बी लाइक दिस, वर्क इज डन। आंसर का अप्रोच इस तरह होना चाहिए, work is done by the gravitational field in moving the unit mass towards the source mass. Since gravitational field is of an attractive nature, therefore, this work done by the field represents sorry represents a loss of energy. To signify this loss, we insert
a negative sign in the formula. ठीक है, तो नवाल का स्टेटमेंट था, हुसैन का स्टेटमेंट था, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं आ गए हैं। एडम का स्टेटमेंट बाकी रह गया है। तो एडम, तुम्हारा वाला स्टेटमेंट मुझे नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ लिखना है, तो मैं वहां पर इसको इंक्लूड करूंगा। रायान ने भी लिखा था एनर्जी लॉस, मोहित ने भी लिखा था, उमर ने भी लिखा था। आई गेस वो सारे टर्म्स आ गए। मैं रीड थ्रू कर दूं। एडम का टर्म रह गया है, वो मुझे नेक्स्ट वाली वर्डिंग में इनकॉर्पोरेट करना है। So let me just read the statement. Work is done by the gravitational field in moving the unit mass towards the source mass. Since gravitational field is of an attractive nature, therefore this work done by the field represents a loss of energy. To signify this loss, we insert a negative sign in the formula. और अब एक final sheet. How would the graph of gravitation potential look like? So पहले brackets में लिख लूं. So we are trying to construct graph of gravitation potential, so phi versus r. Okay, before I move on to the graph, पहले formula देख लेना. और I think formula की terms में, if I ask you to mathematically describe this formula, so can anyone suggest कि यार mathematical terms के अंदर इस formula को describe कैसे करते हैं? फिर इसके बाद इसका ग्राफ बना दूंगा. तो mathematical terms के अंदर how can this formula be interpreted as? Okay, हुसैन ने लिखा है inversely proportional, और ज्यादा students inversely proportional ही बोलते हैं. हालांकि the correct wording should be कि this relationship mathematically is referred to as a negative inverse relationship. Negative because of the sign. Inverse coming from the word inversely proportional, as Hussain pointed out. So the proper wording should be inverse proportional ke bajaye negative inverse. Negative because we are giving due consideration to the minus sign. Inverse from the word inversely proportional. So how would the shape of the graph look like? Here, अगर आपको graphical relationship बनानी हो, तो purely maths के context के अंदर if the vertical axis represents phi and if the horizontal axis represents r being the distance, तो अगर आप नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ बनाओगे, yes it will be inversely proportional, बट नेगेटिव साइन की वजह से ग्राफ ऊपर नहीं बनेगा, एक्सिस के नीचे बनेगा. So I'm using capital R to signify the radius of the earth. So if you make an attempt to construct the shape of the graph on this axis, थोड़ा सा डार्क करके बना देता हूं. So inverse का मतलब है inversely proportional वाला shape बनेगा, negative का मतलब है एक्सिस के नीचे बनेगा. So this is how the shape of the graph would look like. So the shape is of inverse proportionality, and because of the minus sign, the graph is below the x-axis. Short form में लिख भी देता हूं. Phi follows a negative inverse relationship with r. ठीक है, mathematical terms के अंदर this is how you can interpret it. So for those of you जिनको mathematical terms के अंदर inverse के term का मतलब पता है, they can just remember the shape of the graph. For those students के जिनको math का idea नहीं है, तो I guess they should try to remember the graph from the wordings. It's up to you जो आपको सूट करे. तो अगर ग्राफ का शेप याद रहता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वर्डिंग्स की फॉर्म में लर्न कर लेना. वर्डिंग्स कैसे वो भी देख लीजिएगा. As r approaches infinity,
the value of phi approaches 0. ग्राफ से वर्डिंग्स को मैच कर लीजिएगा. As r approaches infinity, the value of phi approaches 0. And for all points within infinity, ग्राफ के साथ वर्डिंग्स को कोरिलेट करते जाइएगा. सो एडम, जो तुमने स्टेटमेंट लिखा था अ वाइल बैक, वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. तुम्हारा स्टेटमेंट था मैक्सिमम पोटेंशियल एट 0. सो एज वी गो क्लोजर ऑलवेज नेगेटिव. सो दैट स्टेटमेंट इज द वन जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है. फॉर ऑल पॉइंट्स विद इन इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ पाई इज नेगेटिव. ठीक है, तो जितने लोगों ने मुझे अलग अलग आंसर्स दिए थे, मैंने उन सारे के सारे आंसर्स को विद इन अप्रोप्रिएट वेरिएशन, उन सारे के सारे आंसर्स को यहाँ कोरिलेट करके दे दिया है. द लास्ट स्टेटमेंट बीइंग द वन जो आदम ने अ वाइल बैक सजेस्ट किया हुआ था. ठीक है, सो वी हैव सीन द शेप ऑफ द ग्राफ, वी हैव सीन द वर्डिंग्स व्हिच विल गो विद द शेप, वी हैव डिस्कस्ड नेगेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, we have seen the significance of the minus sign in the formula. We have defined the term gravitational potential. ठीक है, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने मेंशन कर दी है. We have also recognized that the answer which we get by calculating the gravitation potential at any point, what does that answer tells us. तो उसकी वर्डिंग्स को भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया. उसके साथ साथ हमने फॉर्मूला कर लिया था. एक सेकेंड, लेट द फॉर्मूला अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. और उसके साथ साथ सिंबल कर लिया था और यूनिट्स कर लिया था. तो मैं जस्ट क्विक रिकैप जल्दी से दे दूं. ठीक है, सारे पॉइंटर्स उसमें आ जाएंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट वाज इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ पाई. द सेकंड पॉइंट वाज इट इज गिवन बाय द यूनिट्स ऑफ जूल्स पर किलोग्राम. द थर्ड पॉइंट वाज इट कैन बी वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला phi is equal to minus gm upon r. उसके बाद we applied the formula, we obtained the result, and on the basis of the result we concluded that gravitation potential at any point tells us the amount of energy lost by a mass of 1 kilogram as it moves from infinity to that particular point within the gravitation field. In this case, we also defined the so-called term कि infinity का mathematical मतलब क्या बनता है. Further on, we went with the actual definition of the term gravitation potential. Next, we discussed the importance or the significance of the negative sign. And finally, we went through with the graph of gravitation potential. So मैंने ग्राफ भी कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा होगा. और ग्राफ के साथ साथ उसकी वर्डिंग्स को भी कोरिलेट कर दिया. सो आइदर वेज जो आपको सूट करे, आइदर रिमेंबर द शेप ऑफ द ग्राफ और द स्टेटमेंट दैट गोज विद द शेप, जो भी आपको सही लगता है. जी रोहिल, योर वर्डिंग इज करेक्ट. मैंने स्टेटमेंट आपका भी पढ़ा है. ठीक है रोहिल, एक्नॉलेज कर देना, मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, एक फाइनल चीज बस और बता दूं बिफोर आई कंक्लूड विद टुडेस क्लास. तो एक लास्ट चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ, ये करा दूं फिर कंक्लूड करता हूं. कॉन्सेप्ट ऑफ change in
ठीक है, जरा टर्म देख लीजिएगा, ये एक वर्किंग कराकर फिर कंक्लूड करता हूं। सो स्टेटमेंट्स देखते जाइएगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सेम चीज कर रहा हूं, सिंबल बिल्कुल वही वर्किंग कर रहा हूं जो पहले करी थी। यूनिट, फॉर्मूला, ठीक है, ये चार चीजें। सिंबल क्या होगा, यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, और फिर फाइनली फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो वर्डिंग्स देख लीजिएगा। स्टार्टिंग विद द सिंबल, तो बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाज phi, so change in gravitation potential should be represented by the symbol of delta phi. Units will remain the same. So previously the units per joules per kilogram, the same units will be applicable in this case as well. Formula क्या बनेगा? So there are two ways of writing down the formula, जो भी आपको सूट करे। अगर कंप्लीट वर्डिंग लिखनी है तो इस तरह से लिख देना, शॉर्टर वर्जन में लिखना है तो इस तरह से लिख देना। और फिर फाइनल चीज, व्हाट डज द फॉर्मूला इंप्लाई? The above formula tells us the amount of energy loss slash work done on a unit mass as it moves from one point to another point within the gravitational field of the source mass। थोड़ी सी वर्डिंग को अप्रोप्रिएट कर दो, एक सेकेंड ना। ठीक है, वर्डिंग देख लेना। तो वी वेंट थ्रू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के राउंड बॉक्स बना दूं जो भी आपको सूट करे। So change in gravitation potential denoted by the symbol of delta phi, measured in the same units of joules per kilogram, given by the formula delta phi is equal to phi की final value minus phi initial. And what does this formula imply? So the above formula tells us the amount of energy loss slash work done on a unit mass as it moves from one point, its initial position, to another point, its final position within the gravitational field of the source mass। ठीक है यार, तो आई गेस इस वाले पॉइंट पे आज वाली क्लास को अब कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वाली क्लास से आई कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इज दिस द लास्ट वर्किंग फॉर ग्रेविटेशन? एक आध फॉर्मूला और रह गया एस्केप वेलोसिटी का सुलेमान. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आज कंक्लूड कर रहा हूँ. लेक्चर अभी इन अ वाइल अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जरा रिव्यू करके बाद में नोट्स वगैरह फेयर कर देना. ठीक है यार, क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ. थैंक यू यार, एंड सॉरी फॉर द कनेक्टिविटी इश्यूज. लेकिन आई गेस आज वेदर ही ऐसा था कि देयर वाज हार्डली एनीथिंग दैट वी कैन डू. चलो टेक केयर यार, खुदा हाफिज.